Hello, welcome back to Literary Tutorials by Anisha Mangla. Today's topic is wasteland. So without any pause, I will be starting it further. Just take out your notebook and just write down the introduction, highlight about the important characters and the summary as well as theme of wasteland, which is a very important text of the modernist era and it is often asked in the exams. The Wasteland is a modernist poem. It illuminates the devastating effects of after First World War. It was first published in 1922 in 434 lines. I will be telling you in detail that how many lines are there and in what section, how many lines are included. तो मैं both English और हिंदी में दोनों में बता रही हूँ आपको कि ये modernist पोयम है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बता रही है, उसके जो आफ्टर इफेक्ट हुए थे, इल्यूजन वगैरह, तो उसके बारे में बता रही हैं, राइट. द फर्स्ट पोयम अपीयर्ड इन यूनाइटेड किंगडम इन अक्टूबर इशू ऑफ Eliot's द क्राइटेरियन and the US in the November issue of the Dial. It was published in book form in December 1922. पहले ये एक इशू आया था क्राइटेरियन में और फिर डायल में आया था, बट बुक फॉर्म में ये 1922 में आया. Eliot employs many literary and cultural allusions from the Western canon, such as Dante's Divine Comedy, Shakespeare, Buddhism, Hindu Upanishads. तो इसमें बहुत सारी ये जो पोयम है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. द मेन रीजन ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट कि इसमें बहुत सारी चीजों का यूज किया गया है, बहुत सारे सिंबल्स मिथ यूज किए गए हैं, काफी रेफरेंसेस बुक्स के फॉर्म में यूज की गई हैं, जिनके कारण ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है अंडरस्टैंड करने के लिए. Eliot originally considered the entitling the book. जो सबसे पहले जो इसका टाइटल था, it was He Do the Police in different voices, right? Later version, in the version of poem, Eliot brought back from Switzerland the first two sections of the poem, the burial of death and the game of chess, under this title. जो पहले जो आए थे, ये पोयम 5 सेक्शन में डिवाइडेड है. द बरियल ऑफ द डेथ एंड द गेम ऑफ द चेस, ये फर्स्ट 2 सेक्शन है, तो ये पहले इन 2 सेक्शंस में आई थी अंडर द टाइटल ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कितने लाइन्स में लिखी गई थी, कौन कौन से एल्यूजन्स हैं, कौन कौन सी बुक्स रेफर की गई थी, कौन सी पहली 2 सेक्शंस हैं और किन नाम के अंदर आया था. सो यू नीड टू नो डाउन एवरीथिंग, राइट. और ये जो फ्रेजेस हैं ये कहाँ से लिए गए थे? चार्ल्स डिकेंस की नॉवल आ म्यूचुअल फ्रेंड में से लिया गया था. इन द एंड द टाइटल Eliot chose was the Wasteland. In his first book, Note the Poem, he attributed the title to J.C. Weston's book on the Grail legend, From Ritual to Romance. The allusion is to wounding of the Fisher King and subsequently sterling of his land. तो ये जो इनिशियल में जो ये लास्ट में जो इन्होंने टाइटल चूज किया, इट वाज द वेस्ट लैंड. अच्छा, कई जगह आप देखेंगे कि इसमें को अकेला वेस्ट लैंड दिया गया है. इट इज नॉट वेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड कंबाइन में भी नहीं दिया गया. So it is the wasteland. So omitting of the definite article is oftenly missed, oftenly done, but it is not that, it is the wasteland. अच्छा, ये जो पोएम थी ये एजरा पाउंड जो थे उन्होंने इसको सारी एडिटिंग वगैरह करके इसको फाइनल शेप दिया था, राइट. अब again the highlights are there which you need to borrow. The epigraph The Wasteland is borrowed from Homer. Now Alan Tate, what he said, the wasteland is the music of idea, right? In his note to masterpiece, The Wasteland, poet T.S. Eliot says that phrases, the golden bow, is an important source for understanding the poem. ये जो phrases, the golden bow है, ये एक आर्किटाइपल जो अप्रोच के ऊपर बहुत अच्छी बुक लिखी गई है. तो वो कहता है कि अगर आपने मेरा ये वर्क द वेस्टलैंड अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आपको ये बुक पढ़ना अनिवार्य है. The Wasteland is not the poem Eliot originally drafted.
Eliot's close friend and colleague Ezra Pound, मैंने आपको पहले भी बताया कि एजरा पाउंड ने एक्चुअल में इसको रीड्राफ्ट किया था, एडिटिंग की थी और फिर फाइनल पोएम आया था बाहर, क्योंकि उसको वो ये बहुत कॉम्प्लेक्स और हैवी लगी थी, उसने कट डाउन कर दिया था 433 लाइन्स में, राइट। तो वो now he radically trimmed Eliot's long first draft. Now we will talking about the characters. The narrator, सबसे difficult part है ये narrator को understand करना। ये बहुत different type के guises और shapes ले लेता है। At time the narrator seems to be Eliot himself. पहले Eliot लगता है, फिर लगता है सारी humanity के बारे में बात कर रहा है। In the fire sermon, he at one point the fisher king of the Grail legend. ये legend के बारे में लगता है कि वो narrator है, ठीक है। When he seems to reflect Eliot, the extent to which his ruminations are autobiographical is ambiguous. फिर आता है मैडम सोसाइटिस। ये जो है ये रेफर किया गया है एल्डस हक्सले के नॉवल क्रोम येलो एंड बोरोड बाय इलियट फ्रॉम द टैरो कार्ड एपिसोड। फिर आ जाता है स्टेटसन, अ फ्रेंड ऑफ द नरेटर। देन अ रिच लेडी नेवर रेफर टू बाय नेम। रिच लेडी के नाम से ही बोला जाता है, कभी इसका पर्टिकुलर नेम नहीं लिया जाता। She seems to be surrounded by luxury but unable to appreciate or enjoy it. फिर आ जाता है फिलोमिना। वो जो करेक्टर है वो ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है, जो she was raped by terrorists and then after her revenge was taken by her sister. Then we have a typus lonely, a creature of the modern world. She is visited by a young man who sleeps with her. Then she is left alone again. Then we have a merchant from Simyria, which is in Turkey, probably the one-eyed merchant. Then we have Phlebas, right? So these are the important characters. Now the Wasteland, which is a very important text of the 20th century, right? इसमें कौन कौन से मेन है? The Legend of Holy Grace and the Fisher King. Now this section, this particular entire poem is divided into 5 sections, right? Okay. इसमें से important quotes कौन कौन से हैं ये भी आपको आ जाता है। April is the cruelest month. I will show you fear in a handful of dust. And then there is at last, at the end of the poem, we have a mantra known as Shanti, Shanti, Shanti. And that is taken from the Sanskrit language. Now, what are the themes of the wasteland? The damaged human psyche, the power of shared literary history, the changing nature of gender roles, fragmentation, the power of mythic and religious ritual, infertility and sterility. मतलब जो भी बाद में हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी थिंग्स हमें जब लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए वो सारी इसमें है। Then what are the features? The 5 sections of the poem employ multiple shifting speaker. हमने पहले भी बात की है कि जो नरेटर है वो शिफ्ट होता जाता है and delve into the theme of war, trauma, delusion and death. The poem bears the witness of physical and emotional devastation of post-war landscape. Then setting includes a wealthy woman's bedroom, the garbage-filled Thames, the sea where a drowned man lies, and the final section of the poem calls for peace, Shanti, which we will often ask for after the war. Now, this is the important thing that the poem is divided into 433 lines and it is written in free verse and the blank verse. अब मैंने पहले भी आपको बोला है कि इसमें बहुत सारे लोगों रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो कोई उपनिषदा से है, कोई कहीं से है, तो इन्होंने चौसर, शेक्सपियर, गोल्डस्मिथ, ओविड, होमर सबके जो है रेफरेंसेस यूज किए गए हैं, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, राइट। और ये जो पोयम है ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है और सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रांसलेशन मिला था वो पोलिश का था जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था।
अब हमने यहाँ पे बात की थी लाइंस के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लाइंस हैं आगे 5 में डिवाइड की गई हैं, तो हर सेक्शन की अपनी अपनी लाइंस है. लाइक द बरियल ऑफ डेथ है वो 76 लाइन में है. अ गेम ऑफ चेस है 96 लाइन में है. द फायर सरमन 139 लाइंस की है. द डेथ बाय वाटर 10 लाइन की है जो सबसे शॉर्ट है. एंड देन व्हाट द थंडर सेड वो 113 लाइंस की है. तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है. नाउ 5 सेक्शन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे. द फर्स्ट सेक्शन द बरियल ऑफ डेथ विच कंसिस्ट ऑफ 76 लाइन. इट इंट्रोड्यूस द डाइवर्स थीम ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर. फिर आ जाती है अ गेम ऑफ चेस. ये जो है ये है 96 लाइन की. ठीक है. इट एम्प्लॉयज अल्टरनेटिंग नरेशन in which vignette of several characters address those themes experimentally. The Fire Sermon, it is the third section and it consists of 10 lines, which is the shortest one. It offers a philosophical meditation in relation to imagery of death and views of self-denial in juxtaposition, influenced by Augustine of Hippo. Fourth section, which is Death by Water, it includes a brief lyrical petition, the culmination of the fifth last one. Fourth one is of 10 lines and fifth one is of 113 lines. Right? What the thunder said. It concludes with the image of judgment. Now, I would be giving a short story, what it all consists of. But before that, please subscribe my channel and share with your friends if you like it. Now, the burial of death. ये जो sequence है ये भी आप कैसे याद कर सकते हो? That I need to tell you. You can say the burial of the game chess has been done with the fire sermon without the drop of water, but thunder was created there. And how to remember the lines? See, first is 76, next is 96. So 6, 6, same. Then 9 plus 9 is followed again, right? 9 is followed by 9. तो third जो है हमारा section वो 139 lines का है. So 96 and 139. Then U plus 1 to 9. 9 plus 1, 10. So जो fourth हमारा है वो 10 lines का है. And last one is 10 plus 1 is 11. So fifth section हमारा है 113 lines का. Right? Now the burial of death. The poem begins with a section entitled The Burial of Death. In it, the narrator, perhaps a representation of Eliot himself, describes the season. Spring brings memory and desire, and so the narrator's memory drifts back to the time in Munchen, to the childhood, and to the possible romance with a girl. The memory only goes so far, however. The narrator is now surrounded by, now there is a shift of the place. The narrator is now surrounded by the desolate land full of stony rubbish. He remembers a fortune teller named Madame, who said he was a drowned Phoenician sailor and he should fear death by water. Next, he finds himself on a London bridge. There is a rhyme also, London Bridge is falling down, falling down. So this one is also included in this. Surrounded by crowd of people. He spots a friend from whom wartime and calls out to him. The next one is a game of chess. In the second section, he transports the reader abruptly from the street of London to a gilding drawing room in which sit a rich, jewel-backed lady, the rich lady, who complains about her nerves and wonder what to do, who is never satisfied. The poem drifts again, this time to a pub at a closing time in which two Cockman women gossip with a few stanzas who have moved from the upper crust of society to the London's low life. Next, third one is the fire sermon.
The fire sermon opens with an image of river. The narrator sits on bank and muses on the deplorable state of the world. As decises, he sees a young carbuncle man hop into the bed with a lonely female typist, only to aggressively make love to her and then leave without hesitation. The poem returns to the river where the maiden sings a song of lament, one of them crying over her loss of innocence. Next one, fourth one is Death by Water. Death by Water, the fourth section of the poem, describes a dead Phoenician lying in the water, perhaps the same drowned sailor of whom Madame spoke. Last one is What the Thunder Said. Now the shift of the locale from the sea to rocks and mountain, and the narrator cries for rain, and finally it comes. The thunder that accompanies it ushers in the three-pronged dictum. And last, there is the Upanishad, Data Darvantyam Damyata, to give, to sympathize, to control. With these commandments, meditation is possible despite the collapse of civilization that is underway. And then we have London bridges falling down. So this is all about today's video. I hope you liked it. You have got to know about the wasteland. If you liked it, kindly subscribe and share with your friend. Thank you.